Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to the topic of probability. In this particular video session, just we are going to discuss about the independent events of your topic probability. So previous video session already I am independent event ऊपर discussion करी सारिचे एवं ताकू मध्य apply करिचे multiplication theorem रे. आज वीडियो सेशन again आउ थोड़ा आम इंडिपेंडेंट इवेंट पाखु जीवा तार डेफिनेशन पाखु जीवा तार फॉर्मूला पाखु जीवा एवं देन किछिटा इंपोर्टेंट थियोरम को डिस्कशन करिवा जो गुडाक एक्सरसाइज रो प्रॉब्लम रे हमर कैमरा आसीबो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीवा इंडिपेंडेंट इवेंट रो डेफिनेशन पार्ट पाखु इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ द occurrence or non occurrence of one does not affect the probability of occurrence or non occurrence of the other. गोटे इवेंट रो occurrence बा non occurrence आउ गोटे इवेंट रो occurrence बा non occurrence को कोनोसी अफेक्ट जदी करू नथिबो देन ताकू कहा जीवा हमर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अदरवाइज हम ताकू कहबा डिपेंडेंट इवेंट्स. Theorem 1. If A and B are independent events associated with a random experiment, then probability of A intersection B is equal to probability of A multiplied with probability of B. That is, the probability of a simultaneous occurrence of two independent events is equal to the multiplication of product of their probabilities. Already जोटा को हमें previous multiplication theorem रे discussion करी सारिचे तो आपको आउ discussion हम करूनी. Then directly जीवा theorem 2 पक्को. Then you have theorem number 2 if A1 A2 dot 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 AN are independent events associated with a random experiment, then probability of intersection of all the events is equal to the multiplication of individual probabilities. तापर probability of A1 multiplied with the probability of A2 up to the probability of nth event. Similarly, discussion करिवा pairwise independent events if A1 A2 dot dot AN be n events, suppose n टा event अछंती to a random experiment, then probability of intersection of any two events is equal to the multiplication of individual probabilities. ता माने जोठी की i रे वैल्यूटा 0 वैल्यू संगे समान हेतो ता माने तमे दुटा सेम इंडिपेंडेंट इवेंट को नै माने गोटे इंडिपेंडेंट इवेंट को ता सहित इंटरसेक्शन करबोनी दुटा डिफरेंट हेता दरकार ai और aj must be different from each other and the values of I and j are equal to 1 2 up to n. then जिवा the most important आज वीडियो सेशन रो थ्योरम ऊपर डिस्कशन करिबा. Then the theorem number 3, if A and B are independent events associated with a random experiment, then prove that A complement and B are independent events. A and B complement are independent events and also A complement and B complement are also independent events. तो ये तीनटा को बिट को एबे हमें प्रूव करिवा. Given that A and B are independent events, that is probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. First bit re we have to prove that A complement and B are independent events. That is to show that probability of A complement intersection B is equal to probability of A complement into probability of B. जेमती हेतिला ए बी दुईटा जदि इंडिपेंडेंट इवेंट होउछंती देन देयर इंटरसेक्शन रो प्रोबेबिलिटी टा इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी रो मल्टिप्लिकेशन संगे समान होछि. इट सेमती ए कॉम्प्लीमेंट बी होछि दुईटा इवेंट सेमाने जदि इंडिपेंडेंट हेबे ताले कोन हबो ना सेमाने गरो इंटरसेक्शन रो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू द मल्टिप्लिकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज. ताले प्रूफ करिवा. देन हम जिबा डायग्राम पाखकू. इटा होची A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये होची A इंटरसेक्शन B, ये होची A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, ये हला A सेट, ये हला B सेट, ये हला सैंपल स्पेस S. We know that अच्छा by using the set theory हम जानी चाहिए A complement intersection B
यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी रीजन को जदि मु ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी रीजन सांगे मुझे यूनियन करी ताले मो टोटल बी मिलिबो। तो आपको जदि मु एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी रे अप्लाई करी वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बिकज कहीं ना ए इंटरसेक्शन बी आउ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ये जो रीजन टा अच्छी ए रीजनटा आउ ए रीजनटा एमान होती म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तमाने से इंटरसेक्शनटा होची 5 तमाने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होची। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी टा केते हबना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जेहेतु ऑलरेडी आम पाखे अच्छी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जदि मु कॉमन नहीं गली एठी आ रहिला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट। ताको जदि मु सजेगी लिखिबी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एबे देखो एटा ही हमको प्रूव करिवार थिला, एटा ही हमको एटा प्रूव करिवार थिला। सो ए कम्प्लीमेंट एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देन जीवा सेकंड बिट पाखु, सेकंड बिट को प्रूव करिवा। देन जीवा सेकंड बिट पाखु, we have to prove that A and B complement are independent events. That is to show that probability of A intersection B complement is equal to probability of A into probability of B complement. It is A intersection B complement. From the set theory we know that A intersection B complement union A intersection B is equal to A set. ए लेफ्ट साइड रीजन टाकू मुझे मिड रीजन सहित जब यूनियन करी मतलब ए सेट मिल जाऊँगी बाय यूजिंग द एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। Probability of A intersection B complement is equal to probability of A minus probability of A intersection B. That implies probability of A intersection B complement is equal to probability of A minus probability of A into probability of B. That implies probability of A intersection B complement is equal to probability of A common gala भीतर रहला 1 minus probability of B. That implies probability of A intersection B complement is equal to probability of A into probability of B complement जोटा कि हमको प्रूव करिवार थिला। तब हम कौन लिखिबा सो A and B complement are independent events। तो ये था सेकंड बिट रो प्रूफ। देन जीवा थर्ड बिट पाखु। In the third bit, we have to prove that A complement and B complement are independent events.
that is to show that probability of A complement intersection B complement have a probability of A complement into probability of B complement जेमती एटा दे देछि एटा हम गिवन देछि A आउ B हला इंडिपेंडेंट तापर सेमानकर इंटरसेक्शन टा हबो इंटरसेक्शन रो प्रोबेबिलिटी हबो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी रो मल्टीप्लिकेशन एटी सेमती कॉम्प्लीमेंटरी आमे प्रूव करिवा तो आमे लिखिबा प्रोबेबिलिटी ऑफ A complement intersection B complement आको आमे लिखि परिबा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B रो कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग द डी मॉर्गन्स लॉ देन आमे यूज करिया कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ आमे ऑलरेडी जानि छे A dash intersection B dash is equal to A union B रो होल डैश डी मॉर्गन्स लॉ तो एठी सिंबल केवल मु चेंज करछि देन आ गोटे फार्मूला पढि छे प्रोबेबिलिटी ऑफ A dash is equal to 1 minus probability of A तो ये ए जगह ए यूनियन बी अच्छी तो से भी फॉर्मूला हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी रो फॉर्मूला हला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बदरी खोल दवा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देन 1 minus probability of A minus probability of B plus probability of A intersection B जगह आमे तार वैल्यू पुट करिबा केते लिखिबा ना probability of A into probability of B 1 गला फर्स्ट दुटा एलिमेंट रो कॉमन ता माने रहिला 1 minus probability of A minus probability of B कॉमन गला सेठी रहिला 1 minus probability of A 1 minus probability of A 1 minus probability of A और रहिला 1 minus probability of B 1 minus probability of A रो अर्थ होला probability of A complement 1 minus probability of B रो अर्थ होला probability of B complement it is proved here तो हमें कौन लिखिबा hence आको हमें लिखिबा hence A complement and B complement are independent events so এটা थिला लास्ट बिट रो प्रूफ देन जिबा गोटे थ्योरम पाखु जोटा कि प्रूफ कले आज हमर इंडिपेंडेंट वीडियो सेशन कंप्लीट हबो देन हमें एक्सरसाइज को मूव ऑन करिबा Then the last theorem if A and B are independent events associated to a random experiment then probability of occurrence of at least one or अर्थ suppose A is a event B is another event here A is an event B is another event and it is the sample space S then the probability of occurrence of at least one either A or B probability of at least once यार अर्थ है either A or B that means probability of at least one यार मीनिंग है से तो either A or B रो अर्थ होला A or B माने A union B ता माने मु लिखि परिबे एठी probability of A union B तो मु एठी लिखिबी probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B आगे मते सॉल्व करिवार अछि गोटे 1 मु ऐड कली गोटे 1 मु सब्ट्रैक्ट कली फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द एक्सप्रेशन देन मु कोन कली ना गोटे माइनस टे कॉमन आनली माइनस जदि मु कॉमन आनली ताले भितरे की रहिला ना -1 टा हे गला +1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी plus probability of A intersection B then 1 minus बंधन भीतर रहिला 1 minus probability of A minus probability of B plus probability of A into probability of B काहे पुट कल ना से देछि ऑलरेडी इंडिपेंडेंट देछि बोली A intersection probability of A intersection B जगह रे मु पुट कली probability of A into probability of B 1 minus फर्स्ट दुटा टर्म रो मु 1 कॉमन आनिली ताले भीतर रहिला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A
second ru third 4 ru mu common anili minus probability of b etu rahila 1 minus probability of a 1 minus probability of a then 1 minus probability of b ताले केते हबो ना 1 minus probability of a complement multiplied with probability of b complement. So ये थिला proof of the finding out of a probability of occurrence of at least one, and that is equal to 1 minus probability of a complement of a first event multiplied with the probability of a complement of the second event. So particularly in this video session, just we have discussed about the independent events, definition of independent events, some of the formula of independent events, and some of the theorems based upon the independent events. In the next video session, just we are going to discuss about the exercise based upon this concept. Till then, thank you.